I know, being a 22-year-old, how people in their 20s feels like they have got all the world at their fingertips. But let us be real, is it all true? Definitely not. Life in 20s is like that roller coaster ride that is full of ups and downs. 20s हमारे लाइफ का वो फेज होता है जहां हम सबसे ज़्यादा सेटबैक्स और चैलेंजेस से गुजरते हैं, जैसे कि करियर कंफ्यूजन, society pressure, achieving financial freedom as early as possible, रिलेशनशिप इश्यूज एक्सेट्रा। और ये सब अचीव करने के चक्कर में हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं। और क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता, एक प्रॉपर गाइडेड पाथ नहीं होता, हमें कई बार सेटबैक से गुजरना पड़ता है। सो many of you might be thinking that what is resilience and why we need to build it. Resilience is that inner superpower जो आपको आपके चैलेंजेस और सेटबैक्स को फेस करने में हेल्प करता है और उन्हें ओवरकम करता है। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड सेटबैक्स that felt like huge mountains, always questioning myself whether I'm on the right path or not. But guess what? Every challenge and setback is an opportunity to grow. So, before we unveil those superb and mind-blowing tips, I have one small task for you. आप सबको नीचे कमेंट करना है आपका अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक और चैलेंज जो आपने अपने 20s में फेस किया है या अभी आप फेस कर रहे हो। एंड लेट अस टर्न दिस कमेंट सेक्शन इनटू पावर हाउस ऑफ सपोर्ट एंड शेयर्ड विजडम, एंड ट्रस्ट मी, you are not alone. So, if you have enjoyed till now and are curious to unveil those superb and mind-blowing tips and tricks, then please hit that like button and don't forget to subscribe the channel by clicking the bell icon, because we are ready to level up your resilience game. Let us dive in. Tip number 1. Accept the twists and turns of life. 20s is that phase of our life where we are meant to face unpredictable challenges and difficulties which are just not controllable by us. Challenges and setbacks can stuck our doors anytime, but एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें कंट्रोल करनी चाहिए, जो कि to accept that challenge or difficulty without worrying and by a positive mindset. Sometimes those challenges or difficulties can give valuable lessons or can provide you with great ample opportunities. हम कई बार सिर्फ प्रॉब्लम्स को सोचने में ही बिजी रह जाते हैं, हम उसके अदर साइड सोच ही नहीं पाते कि वो प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज हमारे लिए कुछ वैल्यूएबल लेसन्स लाई हो या हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लाई हो। टिप नंबर 2. ट्रीटिंग फेलियर एज योर फ्रेंड एंड नॉट एनिमी. डू यू नो दिस? Many great achievements are the results of learning from mistakes. We can take an example of Thomas Edison. The great man famously said, "I have not failed. I have just found 10,000 ways that don't work." We can take another example of Steve Jobs. Do you remember that moment when Steve Jobs have been fired from his own co-founded company, that is Apple? So, what do you think? What is difference between these great personalities and us? They are just an human being like us, but the thing that differentiates them with us is that they have always treated their challenges and difficulties as their friends and not their enemies to overcome difficult phases of life. Here, we all need to change our way to look at failures and understand that failure is not an end but a stepping stone towards success. Tip number 3. The power of perspective. Everything in this world which you want to achieve or overcome will become a success only and only when you take your first step towards it with a positive mindset. And positive mindset develops only when you start looking at challenges as the stepping stone towards success, and this is where the perspective game come into play. जब भी हम प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, यानी पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उन्हें ओवरकम कर पाए. दिस इज़ वेयर वी अट्रैक्ट सक्सेस बाय जस्ट चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट. यू ऑल नो दैट सेइंग दैट व्हेन लाइफ हैंड्स यू लेमन, मेक लेमनेड. दिस इज नॉट जस्ट अ सेइंग, इट्स अ माइंडसेट. Tip number 4. Surrounding yourself with resilient warriors. The most important point if you really want to transform yourself
into a resilient warriors, because we all know that we become that person which we surround ourselves with. By surrounding people who have experienced life storm, we indirectly create a support network where people help us to grow and to overcome setbacks and challenges through their experience. These people will always act as an extra helping hand by providing you with ample support and prevent you from self-doubt, which is the main reason for failure. Tip number 5: Self compassion, your secret superpower. Self compassion is undeniably your secret superpower for building a strong resilience, and trust me, this tip has helped me a lot in my life. जब हम अपने आप से एक काइंड और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम कुछ ऐसे एबिलिटीज को अनलॉक करने में हेल्प करती है जो हमें चैलेंजेस और सेटबैक्स से ओवरकम करने में हेल्प करता है, और वो भी ज़्यादा ग्रेस के साथ, विदाउट सेल्फ डाउटिंग और सेल्फ क्रिटिसाइजिंग. Trusting and believing on oneself is the first and the most important step one has to always follow when he or she has to deal with setbacks. Tip number 6: Setting goals for resilience. इमेजिन कीजिए आपका जो गोल है वो एक ट्रेजर मैप है और आपका रिजिलियंस एक कंपास है जो आपको रास्ता दिखाता है उस खजाने तक पहुंचने का. हमें कहीं भी घूमने जाने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, आवर गोल, वेयर वी वांट टू गो. उसके बाद हम अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं दैट इज व्हाट इज द करंट लोकेशन ऑफ दैट प्लेस टू गो वेल प्रिपेयर्ड टू टैकल एनी डिफिकल्टीज दैट कम ऑन द वे. तो फिर हम ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि हमारे लाइफ में बिना गोल सेट किए हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी डोंट सेट अ गोल वी cannot take the first step or plan anything to get to that goal. Your goal will become a success only and only when it is tied up with resilience and taking small achievable steps at a time. Tip number 7: Gratitude, your resilience medicine. In the everyday hustle of life, we often forget to count our blessings. When we offer gratitude or when we are thankful towards good things, whether it is big or small, we get a positive boost. जब भी आप ग्रेटफुल होते हो, थैंकफुल होते हो चीज़ों की तरफ, वो आपको हेल्प करता है फोकस करने में ऑन द गुड थिंग्स, what is going well, even when things are getting hard. So always remember, when life gets tough, take a moment to appreciate the good things. There you have it, my resilient warriors. 7 psychological tips to build unshakable resilience in your 20s. Life may challenge you, but with these strategies, you are not just facing the challenges but conquering them and emerging stronger on the other side. अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी या अगर आपको ऐसा लगता है कि इन टिप्स से आपको वैल्यू मिले हो, then please hit that like button and don't forget to subscribe the channel for such valuable content. Until next time, stay resilient, stay fabulous, and keep shining on this incredible journey called life. This is Aniket, Adhav, taking your leave for now. Thank you.